हे गाइस एंड वेलकम टू टुडेज़ एपिसोड ऑफ होम सीरीज़। आज के एपिसोड मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, इवन दो मेरे ना हुलिये से लग रहा होगा ना मेरे इन्वायरमेंट से लग रहा होगा, बट मैं क्या करूँ, आई एम इन द मिडल ऑफ हैविंग दिस हाउस पेंटेड और हम प्रैक्टिकली एक कमरे में रह रहे हैं और एग्जैक्टली इस वक्त वहीं पेंट हो रहा है जहाँ बैठ के मैं फ़िल्म किया करती हूँ। सो उस कमरे से सारा सामान निकल के बाहर टीवी लाउंज वाले एरिया में आया हुआ है। सो माई हाउस इज़ अ मेस and there is no way that I could like dress up and be all cute while my house looks like that. But आज की एपिसोड में जनाब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया ब्यूटी रूम प्लान करना है जहाँ पे हम वीडियोस बनाया करेंगे। सो जनाब द इनिशियल आइडिया आई हैड अबाउट दिस ब्यूटी रूम वाज अव्वल तो मुझे कमरों की कन्फ्यूजन थी। सो अब ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है एंड जो मेरा कमरा है जो कि मेरा ख्याल था कि ब्यूटी रूम होगा उसमें कुशन्ड वॉल है पीछे जो कि नेवी ब्लू से कलर की है। सो with that in the background मेरा ख्याल था that would be my beauty background, and with that in the background I could not really have a very colorful and different vanity क्योंकि white सबकी vanity होती है। I wanted to do something different, लेकिन with that in my background the only option was to have a white vanity. But now that the confusion is clear and I no longer have that as my beauty room, तो I had my options कि मैं कैसी vanity बनवाऊँ. So I could go with a wooden, like regular wooden vanity जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं मेरे कमरे की, अगर आपको नज़र आ रही हो तो. And other than that you could like do different things. अगर आप MDF यानी कि जो नकली वुड होती है वो शीट्स जो आती हैं उसकी वो यूज़ करके अगर आप अपनी वैनिटी बनवाते हैं तो यू हैव दी लाइक द स्काई इज़ योर लिमिट. So I decided to go with a navy blue theme. I saw this vanity online. मैं यहाँ पिक्चर पोस्ट कर दूँगी. It was a navy blue vanity with a marbleized top. And ये बाथरूम की vanity थी जहाँ जो आपके जिसमें sinks फिक्स हुए हुए होते हैं. So it was that, but it was navy blue, and navy blue मेरी weakness है. It's my favorite color in the entire world. So my imagination right now is a navy blue vanity with a marbled top. और ये मैं कंस्ट्रक्ट करवाऊँगी, मैं बनवाऊँगी 2-3 जगह से. मुझे इसकी कोट लेनी है, विच इज़ वाई मुझे एक ड्राइंग बना के देनी है उनको कि मुझे कैसी वैनिटी चाहिए. मेरा दिल ये था कि आई वॉन्ट अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स लाइक जैसे आपके आइकिया के एलेक्स ड्रॉर्स होते हैं. अगेन आई पोस्ट अ पिक्चर हेयर. उसमें जो शुरू वाले 2 ड्रॉर्स होते हैं दे आर लाइक शैलो और नीचे वाले 3 ड्रॉर्स जो होते हैं वो डीप होते हैं. सो माई आइडिया वॉज दैट. बट एलेक्स ड्रॉर आपका काफ़ी छोटा होता है, इतना सा होता है. उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी छोटी होती है, मे बी लाइक जितना आपका ड्रेसिंग टेबल होता है उतनी होती है, लाइक 2 feet. तो आई वॉन्टेड ऑब्वियसली समथिंग एज अ वैनिटी, आई वॉन्टेड समथिंग बिगर. सो मैं चाह रही थी अ वैनिटी दैट वुड बी 4.5 feet लॉन्ग, और मैं उसको चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के तौर पे बनवाना चाह रही थी जिसमें ऊपर वाले 2 ड्रॉर्स शैलो हों और नीचे वाले 3 ड्रॉर्स डीप हों. बट व्हाट आई एम हेयरिंग अगैन एंड अगैन इज़ कि जब आप इतने बड़े ड्रॉर को, आई जस्ट वॉन्टेड लाइक 5 ड्रॉर्स ऊपर नीचे, एंड दे कीप टेलिंग मी कि जब आप इतने बड़े ड्रॉर को लाइक सिर्फ 2 रेल्स के साथ सपोर्ट देते हो तो यूल हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम डीलिंग विद दोज ड्रॉर्स, स्पेशली जब उनमें मेकअप आ जाएगा. एंड 1-2 जगह से ये बात सुनने को मिली होती तो और बात थी, बट दैट्स व्हाट आई कीप हेयरिंग. सो दे गेव मी द ऑप्शन कि आप उसमें लाइक 10 टेबल बनवा लो, लाइक आधे आधे. एंड आई जस्ट डोंट लाइक द लुक ऑफ दैट. यहाँ पे भी वही है, एंड इट जस्ट फील्स लाइक अ वेरी रेगुलर ड्रेसिंग टेबल टू मी. सो आई एम गोइंग टू हैव टू डिज़ाइन अ डिफरेंट वैनिटी एंड आई हैव सम आइडियाज़ इन माई माइंड. सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी एंड साथ में यहाँ एक कैमरा लगाया हुआ है, तो जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो आप लोगों को भी नज़र आएगा एंड वी कैन एक्चुअली लाइक गो ओवर सम आइडियाज़. आई रियली विश कि हम रियल टाइम में ये बात कर रहे होते, मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में आके आप लोगों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर रही होती, आप लोगों का फीडबैक ले रही होती. क्या ही बात होती. But this is what we can do right now. So chale, we are going to get started and let's design this vanity. So इतना तो हमें पता है कि we want a marbleized top, ठीक है. By the way, ये जब ड्राइंग के क्लिप्स में ऐड करूँगी तो प्लीज़ डोंट जज माई ड्राइंग. I've never been able to draw like even an apple my entire life. मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है. So सबसे ऊपर तो हमारी आ जाएगी marbled top, ठीक है. I'm gonna give the dimensions right here. So ये मैंने ड्रॉ किया है मार्बल टॉप, ठीक है. ये मैं चाह रही हूँ कि वाइट जो है इट शुड बी लाइक 4.5 inches, दैट्स 4.5 feet, दैट्स 54 inches, ठीक है जी. और इसकी जो डेप्थ मैं चाह रही हूँ
वो मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट 20, लाइक ये जो आपका रेगुलर ड्रेसिंग टेबल है दैट्स 18 इंचज़ आई थिंक, तो 20 इंचज़ हो जाए इसकी डेप्थ तो बहुत अच्छा है। और हाइट इसकी मैं चाह रही हूँ कि जो डाइनिंग टेबल जिसके साथ बैठ के मैं फ़िल्म करती हूँ, अगर आप मेरी पिछली सारी वीडियोस देखो तो दैट्स द परफेक्ट हाइट, क्योंकि वो वीडियो में नज़र भी नहीं आता है एंड इट गिव्स मी लाइक परफेक्ट सपोर्ट टू पुट ऑल ऑफ माई मेकअप ऑन इफ़ आई एम डूइंग अ गेट रेडी विद मी। इवन दो इस वैनिटी को मैंने फिल्मिंग पर्पज़ के लिए लाइक एज माई डेस्क यूज़ नहीं करना, इट विल बी ऑन माई बैक इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़, दैट्स द प्लान फॉर राइट नाउ। उसकी हाइट इज़ प्रिटी परफेक्ट, दैट्स लाइक 31 इंचज़, मैं आज उसको मेजर करके आई थी। But this one I would like, let's make it 32. So here we go. Here is like a rough sketch of the vanity. 54 inches इस तरह से, 32 inches इस तरह से, and the depth will be 20 inches. ठीक है, अच्छा now बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि इतनी लंबी लाइक 54 इंचज़ में एक टेबल नहीं एडजस्ट होगा, एंड आई रियली डोंट लाइक द लुक ऑफ लाइक टू टेबल्स वाई डू आई कीप सेइंग टेबल्स, टू ड्रॉर्स इन एवरी रो। तो अनदर डिज़ाइन दैट आई हैड इन माइंड वाज टू हैव लाइक 3 really big drawers in the center, ठीक है। सो लेट्स डू 2 1-1 फुट के ड्रॉर्स साइड पे विच इज़ लाइक 12 इंचज़, सो इसको बाद में लिखते हैं, बट सेंटर में हमें लाइक अगर हम दोनों तरफ 1 फीट के ड्रॉर्स छोड़ दें तो सेंटर में हमारे पास आई थिंक 2.5 फीट 30 इंचज़ बच जाता है, ठीक है। सो सेंटर वाला बिग टेबल बिग ड्रॉर दैट वुड बी 30 इंचज़, ठीक है। सो वील ड्रॉ लाइक 3 ड्रॉर्स कर लेते हैं हम। So जैसे ये राइट, सो वी हैव 3 ड्रॉर्स इन द सेंटर और ये होंगे 30 इंचज़ के, ठीक है। लेकिन इनकी जो डेप्थ होगी वो ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं होंगे, सो आई वांट देम टू बी लेट्स से 6 इंचज़ ईच कर लो, ठीक है। सो 18 इंचज़ के ये 3 डेस्क हो गए। इनकी साइड्स वाले जो मैं ड्रॉर्स चाह रही हूँ वो डीप चाह रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब आप फाउंडेशंस लाइक ये वाले भी हैं, ये 5 इंचज़ डीप हैं, सो इनमें फाउंडेशंस ये स्प्रे बॉटल्स खड़ी नहीं की जा सकती, आई शैडो पैलेट्स खड़ी करके नहीं रखी जा सकती जो थोड़ी सी टॉल होती हैं। सो व्हाट आई वांट इज़ अ डीपर ड्रॉर ऑन द साइड, लाइक ऑन ईच साइड आई वांट डीपर ड्रॉर्स। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि इन दोनों साइड्स पे आ जाएँ, लाइक ये 18 इंचज़ हो गए 3 ड्रॉर्स के साथ, सो वाई डोंट वी डू लाइक 2 ड्रॉर्स ऑन ईच साइड of 9 inches each. 9 inches is a good size. So these will be 1 feet, yani 12 inches like this and 9 inches like this. So if you can imagine something like this. यहाँ पे भी 2 deep drawers, so अगर आपने स्टैंड में अपनी लिक्विड लिपस्टिक्स खड़ी करनी है तो वो भी ड्रॉर अड़ेगा नहीं, इधर भी 2 डीप हो जाएंगे, इधर भी 2 डीप हो जाएंगे और बीच में 3 थोड़े से निस्बतन शैलो हो जाएंगे। लाइक आई सेड ये 5 इंचज़ हैं तो मैंने 6 इंचज़ रख लिया, विच आई थिंक इज़ अ गुड साइज़। एंड आई थिंक नीचे वाला जो हिस्सा है वट एवर वी लेफ्ट विद हेयर, अगर हमने 32 इंचज़ ली है उसकी टोटल हाइट, एंड लेट्स से जो नीचे इसके फीट होंगे दोनों तरफ वो और ऊपर जो मार्बल है उसको मिला के लेट्स से 3 इंचज़ अगर जगह ज़ाया हो रही है तो वी गेट लाइक 11 इंचज़ ऑन द बॉटम। डू आई रियली नीड एन 11 इंच? बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि इसके नीचे लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू लाइक अ 3 इंच, जस्ट अ 3 इंच डीप। ये उनसे पूछेंगे कि सिर्फ अगर एक ड्रॉर हम ऐसा कर लें जो कि थ्रू आउट चल रहा हो, एंड इसको हम कर लें 3 इंचज़ डीप, सो दिस वन। एंड ये हम 3 इंचज़ इतना सा ड्रॉर इसलिए ले रहे हैं लेट्स से इतना सा कि इसको हम ज्वेलरी ड्रॉर बना सकें, यू नो इतनी सारी ज्वेलरी इसमें ले आउट कर सकें। एंड देन विद वट एवर इज़ लेफ्ट यहाँ पे हम 2 ड्रॉर्स बना लें, सो अगैन वी गेट 2 ड्रॉर्स ऑन द बॉटम, और ये भी हमारे पास होंगे लाइक काफ़ी डीप। सो लेट्स से 8 इंचज़ यहाँ पे होगा, सो दैट इज़ 18 इंचज़ इस तरह से एंड 8 इंचज़
that's 26 and 3 inches 29 and total height 32 है. So let's say नीचे और ऊपर जो जगह extra यूज़ हो रही है उसमें 3 inches तो extra लग ही जाएगा. So this is like one model that I had in mind. और दूसरा प्लान जो है वुड बी टू नॉट हैव दीज ज्वेलरी डोर्स. ये मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, बट इसी तरह का मैं एक और स्केच बना लूँगी विदाउट द ज्वेलरी डोर्स एंड वील सी कि वो किस वाले डिज़ाइन को अप्रूव करते हैं, किस चीज़ की मुझे कोटेशन देते हैं. माई एस्टिमेट इज़, या मेरा इरादा ये है या मेरा दिल ये है कि 25 से 30,000 के बीच ये वैनिटी बन जाएगी. बहुत अच्छे तरीके से बन जानी चाहिए. सो दैट इज़ माई बजट फॉर द वैनिटी. बट या, I'm really excited to be starting this episode of the home series, and I hope you guys are excited with me. And that's it for right now. I'll see you guys in a little bit. Hey guys, hi. So मैं last time भी अपने अम्मा बाबा के घर आई थी तो इन्हीं कपड़ों में थी, but I literally, oh my god, मैं सुबह से बाज़ार में खजल ख्वार होके आ रही हूँ. So I literally don't care what I look like right now, but I did want to film some content for the planning my beauty room video, क्योंकि आज मैं कुछ चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ जो कि ब्यूटी रूम के लिए होंगी. So I thought कि this would like fit into that video perfectly. So I did pick up a few things from different like places today. For example, last night I placed an order for Scott Barnes के makeup brushes. Like Tati sold me on them, and so because those brushes are extremely fancy, I wanted a fancy brush holder for them, like not your ordinary brush holder. I wanted something fancy so I can put them on display. So ये मैंने लिया है. It's crystallized and it's simple and sleek but also very fancy. So I really liked that. उसके अलावा I picked up like ये उसी दुकान से जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ अपने last update में, जहाँ से मेरी अम्मा तरह तरह की यूनिक चीज़ें लेती हैं. उनके पास ये सेट था विद दीज लैशेस, और ये है तो बाथरूम वैनिटी सेट, बट आई थिंक इट डिज़र्व, लाइक इट्स सो कूल, इट डिज़र्व्स टू बी डिस्प्लेड ऑन माई ब्यूटी स्पेस. तो आई एम प्रॉब्ली गोइंग टू लाइक पुट माई लोशन और लाइक इवन लाइक माइसेलर वाटर इन दिस. और इसमें हम ब्रशेस रख सकते हैं, लिप लाइनर्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं. एंड देन दिस कैन बी जस्ट लाइक आवर मिक्सिंग डिश जिसमें हम अपने फाउंडेशंस मिक्स करें, थिंग्स लाइक दैट. लाइक दिस वुड बी रियली नाइस. उसके अलावा आई रियली डोंट नीड अ ज्वेलरी बॉक्स, इसलिए क्योंकि मेरी वैनिटी इट्स इन द मेकिंग यू गाइज. लास्ट टाइम जब मैंने इस वीडियो के लिए फिल्म किया था क्लिप, तो आई डिज़ाइंड इट एंड नाउ इट्स लाइक इन द वर्क्स राइट नाउ, एंड आई हैव सच अ गुड फीलिंग. बजट थोड़ा ऊपर चला गया, बट आई थिंक आई एम गोना गेट एग्जैक्टली व्हाट आई एम इमेजिनिंग इन माई हेड. And I'm very excited to show you guys. But I did like really like this jewelry box, so I did pick it up. It has a giant mirror and like this big compartment. कोई इसकी like divisions नहीं है, but I really liked this snake skin kind of element to it. उसके अलावा I did pick up some backdrops. वैसे तो ये कि जो मैं vanity बनवा रही हूँ, I would like that to be my backdrop for the most part. लेकिन I do want to use the wall जिसका wallpaper I hate. I'm gonna install like a curtain rod on it, and I'm gonna use that for like when I want to spice things up. I want the focus to be on me. I'm doing like a themed makeup tutorial. Like I just want to switch things up. So uske liye I want to use different backdrops, and I did pick up a few. Let me show you. So these first two जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये basically failed cushion cloths हैं. ये मैंने cushions के लिए लिए थे different, and they were rejected. Like हम घर आए तो even I rejected them. बाज़ार में अच्छे लग रहे थे, but it often happens कि आप घर आते हो, आपको it doesn't like make much sense to you after you're home. So I thought this would be like really good if I want to do like a black smoky eye or something like that. So it would be a nice background, and plus it's pretty like opaque. बहुत ज़्यादा इसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, सो वो जो ऑरेंज वॉलपेपर है वो इतना इसमें नज़र नहीं आएगा. दैट वुड बी ऑसम. आई डोंट वांट दैट वॉलपेपर इवन टू पीक थ्रू, सो इसलिए आई रियली लाइक्ड दिस. इसके अलावा दिस सेकंड वन इज़ अनदर फेल्ड सोफ़ा कवर. ये हमने डाइनिंग चेयर के लिए एक लिया था बिकॉज माई डाइनिंग चेयर्स आर गोइंग टू बी ऑल डिफरेंट कलर्स. तो उसमें एक कलर हमने ये सेलेक्ट किया था विच इज़ अ रस्टी ऑरेंज. एंड जब हमने चारों कलर्स लाइक चारों डाइनिंग चेयर्स के कलर्स साथ रखे तो दिस जस्ट वॉजंट गोइंग विद द थीम एंड द इंटायर फैमिली ऑफ द कलर्स. तो ये भी रिजेक्ट हो गया. सो मे बी विल यूज़ दिस फॉर कुशन कवर्स, मे बी विल यूज़ दिस फॉर बैकड्रॉप, आई डोंट नो. इस ऑरेंज वाले की तरह का एक ग्रे भी लिया है मैंने, डार्क ग्रे, विच आई डोंट हैव हेयर.
अंदर से जाके लाना पड़ेगा एंड आई एम नॉट डूइंग दैट. बट आज मैं बैकड्रॉप की ही नज़र से 2 कपड़े लेकर आई हूँ. दिस वन इज़ अगैन इट्स ब्लैक एंड इट्स द फर्स्ट थिंग दैट लाइक I मतलब caught my attention when I was looking for these kinds of fabrics, and ये definitely see through है, so I might put it on top of the grey one. So उस तरह से हम इसको use करेंगे so that वही orange wallpaper बीच में से peek through ना करे. But it has like, I don't know if you can see, but इसमें shimmer का aspect है. I think वो मैं आपको उल्टी side दिखा रही हूँ. Now you can probably see the glitter in the cloth as well, and I think it would translate nicely on the camera as well if this is my backdrop. I think it would look cool. और ये थोड़ा stretchy सा material है, so I think backdrop के लिए बहुत अच्छा रहेगा. और the last fabric I picked up for my backdrop, again हम इसको grey के ऊपर आगे लग के use करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा see through है, but it has a nice stretch to it in the opposite direction. इस direction में it has a stretch to it. और ये भी bronzy सा color है with a little bit of sparkle going through it, and this would also be a nice backdrop I feel like. So I think that's enough backdrops for now. Obviously ज़रूरत पड़ी तो और ले लेंगे, but फ़िलहाल like मेरी list में थे कि मैंने लेने हैं and I already got them. उसके अलावा like there are definitely a few things in works for the beauty room. मैंने यहाँ पंखा नहीं चलाया हुआ because the audio would have been crap अगर मैं पंखा चलाती, because I don't have my mic with me, so I'm gonna go because I'm literally dying here. But yeah, that was my little check-in for this video, and I'll see you guys in a little bit. Hi guys, it's been a month since I filmed the footage जो आपने अभी भी देखा है, and wow, I look super cute. I just realized I look super cute throughout this video, but कुछ नहीं हो सकता इस बारे में. So surprise, I've moved to my new house और महीना हो गया है जो क्लिप आपने अभी देखा उसको फिल्म किए हुए. And the initial idea was that I would come to this house, I would do an empty house tour, which I didn't do, and I would do like a planning my beauty room with you guys in an empty beauty room. लेकिन जब मैं यहाँ move की तो things had already come to the beauty room and it was a mess, and there's no way like to show you the ugly wall, the window, the other walls, my plans for them. So I'm ending the video here and I'm just going to show you guys the finished result, and I think that would be nicer. So this video go, let's keep it short, and yeah, I'll show you guys the finished look in one of the future videos, inshallah. That is it for today's video, planning my beauty room with you guys. It's all very exciting and it's coming together. I've still not set it up, like I'm very excited to do that and to share that with you guys just as much as I enjoyed sharing the planning part of it with you guys as well. So yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please do not forget to give this video a big thumbs up. Subscribe if you're not subscribed already, and I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.